तू मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना, तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। कांशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ने मेरे बलबीर को रंधावा लो सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय गुरुदेव एंड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जिथे किथे भी तुसी कांशी टीवी देख रहे हो। आज दे हाल टॉक शो लेके आए स्पैशल गैसट एंड एज यू नो कि हमेशा से हाल टॉक शो विच गलबात करते हैं साड़ी फिजिकल हैल्थ, मैंटल हैल्थ, इन्वायरमेंटल हैल्थ ते नाल स्पिरिचुअल हैल्थ के बारे। सो अज जी खास जानकारी से तुहाडे लिए लैके आए जो साडे खास गैसट ने वो जानकारी तुहानूं देणगे टीबी अवेयरनैस के बारे, क्योंकि साडे काफ़ी व्यूअर्स चाहते सी कि कुछ ना कुछ सानूं जानकारी मिले टीबी के बारे। सो अज दे साडे जिहड़े गैसट ने वो तुहानूं अवेयरनैस देणगे सैनवल हॉस्पिटल तो हैगे कि टीबी हुंदा की है। ये असीं काफ़ी एरियाज जिहड़े हैगे टीबी दे कवर करांगे, जिहदे विच हैगा कि टीबी हुंदा की है, इनू चैक किद्दां कीता जांदा है, साइन एंड सिम्पटम्स की हुंदे है, कदों सानू जीपी दे नाल जाके गलबात करनी चाहिदी हैगी है, ते टीबी दी जिहड़ी ट्रीटमेंट है वो किस तरीके दे नाल कीती जांदी हैगी है, एंड टीबी स्क्रीनिंग जिहड़ी हैगी है वो की हुंदा है। सो अज दे साडे जिहड़े गैसट ने उन्हां दा स्वागत करांगे। सब तो पहला ये सारी जानकारी उन्हां कोलों लैण दे लई सो मेरे नाल ने रायन एलन जो कि हैगे टीबी दे क्लिनिकल नर्स स्पैशलिस्ट एंड सैनवल हॉस्पिटल तो आए ने सानू पूरी जानकारी देण वास्ते कि टीबी हैगा की है। सो इन्हां दा वेलकम करदे आ कांशी टीवी ते। Alan, thank you so much for coming to Kanshi TV and giving us awareness on TB. No problem. Thank you very much for having me and inviting me today. सो एलन जिहड़े हैगे रायन एलन जिहड़े काम करदे आ सैनवल हॉस्पिटल दे विच, ते इन्हां कोलों जाणांगे कि इस लाइन दे विच आए किस लिए, क्योंकि साडा हमेशा कोई ना कोई मकसद हुंदा है जो भी असीं करियर चूज़ करदे हैगे आ उहदे विच असीं क्यों आए आ। सो व्हाट वाज द रीजन यू वांटेड टू बी अ टीबी नर्स एंड व्हाट वाज योर बैकग्राउंड बिफोर दैट, इफ यू कैन टेल आवर viewers a little bit about that? Yeah, so I originally started my nurse training in 2013 and I had a placement with the TB nurses, and I spent a very short time, only 2 weeks with the TB nurses, and it was just so interesting the weeks that I spent there, how TB can affect anyone. So we have lots of young people on TB treatment, older people, lots of different ethnicities, so it was really interesting. Going into different environments, so not just the university. Sometimes we go to the school, we go to the wards, we go to different workplaces where patients might have TB. So it was really interesting. But when I first qualified, I worked in intensive care at the hospital, and occasionally we had some really poorly people with tuberculosis. And when you look into tuberculosis, if you catch it early enough, we have very good treatment for it, and we can prevent people getting that ill. So that TB prevention aspect was really interesting for me as well. Try and prevent people getting to that degree of TB illness where they need to go into intensive care. Okay, so 2012, that was your work experience? Yeah, so started in sort of 2013 was when I started the student nurse training, but I worked in healthcare prior to that as well. Sort of in domiciliary care, so going into people's homes and things, looking after them, and then started my nurse training, and after 12 months in intensive care I started working with the TB team, and I've been there ever since. So I've been there for six years now, just over 6 years. You must be enjoy so much that's why you are in that area, isn't it? So मैं रायन एलन को पूछ रही सी भी की रीजन सीगा कि इन्हां ने जिहड़ा हैगा टीबी नर्सिंग दा फील्ड चूज़ कीता, ते कहंदे भी 2013 तो इन्हां दा जिहड़ा एक्सपीरियंस सी टीबी नर्सिस दे नाल जदों इन्हां ने कीता, जदों लर्न कर रहे सी, कहंदे मेरा वो एक्सपीरियंस जिहड़ा सी बहुत ही वधिया रहा जदों मैं टीबी नर्सिस दे नाल जांदा सी, देखदा सी कि किद्दां ट्रीटमेंट हुंदा है, की करदे हैगे एंड इंटेंसिव केयर जिहड़ी हैगी किस तरीके दे नाल है, लोग की टीबी नूं समझदे आ, ओहदी ट्रीटमेंट किस तरीके दे नाल कीती, ये चीज़ां जिहड़ियां मैनूं बहुत इंस्पायर करदियां सीगियां, ते इसलिए मैं डिसाइड किया कि मैं इस लाइन दे विच रहना हैगा। सो बहुत वधिया हैगा कि जदों असीं एक्सपीरियंस करदे एज ए नर्सिंग दे विच तुहानूं डिफरेंट फील्ड दे विच एक्सपीरियंस करन दा मौका मिलदा हैगा, ते तुसीं चूज़ कर सकदे हो कि वंस यू आर क्वालीफाइड जदों तुसीं हो जाओ तुसीं किहड़ा एरिया चूज़ करना है। ते एलन ने चूज़ किया भी मैं हाँ नर्सिंग दे विच अपना टीबी जिहड़ा हैगा टीबी दे बारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सो हुण एलन कोलों जाणांगे कि टीबी हुंदा की है। सो विल कम टू द मेन क्वेश्चंस नाउ, व्हाट इज टीबी? So TB stands for tuberculosis, and tuberculosis is a bacteria, okay, and once
the bacteria enters your body, it can cause a problem anywhere in the body. So most people think of something called pulmonary TB. So this is TB that affects the lungs. But TB can actually cause a problem in multiple different areas of the body, and the symptoms can be different dependent on where the bacterial infection is causing a problem. ओके सो मैं एलन कोलों जानना चाहती सी भी टीबी होंदा की है कि साडे काफ़ी जड़े व्यूअर्स है जानना चाहते होंगे भी यह है की चीज़ तो यह एक बैक्टीरिया होंदा है जो कि तुहाडे सिर तो लैके पैरों तक किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी ते इफेक्ट कर सकता है पर ज़्यादातर देखने दे विच आया है कि साडे जड़े जानन वाले हैं ऐसे सोचते हैं भी जस्ट जड़ा टीबी है छाती दे विच ज़्यादा होंदा पर यह नहीं है यह किसी भी पार्ट बॉडी दे विच हो सकता है सो कोई भी पार्ट होए ओदे विच बैक्टीरिया अपना अफेक्ट अलग तरीके दे नाल करदा ओदे साइन एंड सिम्पटम्स अफेक्ट होंदे अलग अलग होंदे हैं इदा एलन ने दस्या सो हाउ डू वी चेक इफ समबडी हैज़ टीबी So like I say, sometimes it's dependent on where the TB is causing that person, that patient a problem. If it's pulmonary TB, so it's affecting the lungs, often we can get things like sputum samples. So these are, when people are coughing, they can sometimes bring up some sputum and we can send that to the lab and get it tested. Sometimes we'll do things like x-rays, so we'll have a look and see if there's any abnormalities in the lungs that can cause that problem. And there's all the other tests, so if it's causing problems elsewhere in the body, x-rays not always the most appropriate investigation for that. Sometimes you could have ultrasounds, or sometimes you might take biopsies of those areas that's causing you a problem. Sometimes there is a blood test we can do which can tell us if your body has TB exposure. So if in the past you've had contact with someone, a family member, a friend or a work colleague or a stranger that had the infectious form of TB, our blood test can tell if you've had that exposure, so we can try and prevent you getting sick later on in life. सो जो टीबी का चैक करने का तरीका है बहुत अलग है डिपेंड करता कि किहड़े पार्ट दे विच तुहाडे जिहड़ा हैगा टीबी ने इन्फैक्ट किया हैगा सो जिहड़े वायरस जिहड़े हैगे वो टीबी दे कित्थे हैगे सो ये जिहड़े हैगे टेस्ट काफ़ी एक्सरे भी हो सकता है अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है सीटी स्कैन भी हो सकता है चैस्ट का स्कैन भी हो सकता है तो मूकस जिहड़ा हुंदा है साडू बलगम जिहड़ी आंदी है उहदे तो भी मुआयना किया जाता है तो इहदे नाल नाल तुहाडा ब्लड टेस्ट भी हो सकता है तो स्किन टेस्ट भी हो सकता है जिन्हों की बायोप्सी कहा जाता है सो यह डिपेंड करता कि किहड़े पार्ट दे विच तुहाडे जिहड़ा हैगा टीबी ने जड़ मली हुई है उस तो बाद जिहड़े हुंदे एक्सपर्ट वो डिसाइड करते भी किहड़ा टेस्ट तुहाडे लई वधिया रहेगा जेकर एक्सरे बैटर रहेगा तो एक्सरे किया जाता है जेकर स्किन टेस्ट एज ए बायोप्सी करनी है तो वो अगर तुहाडे लई रेवलेंट हैगा तो वो किया जाएगा नहीं तो होर जिहड़े ऑप्शनस हैगे अकॉर्डिंग टू कि कित्थे तुहाडे टीबी है उहनूं देख के फिर एक्सपर्ट्स तुहानूं दसदे भी यह चीज़ दे नाल तुहाडा जिहड़ा हैगा मुआयना किया जाएगा सो अगे चलदे साडा जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन हैगा व्हेन दे नीड टू see the GP. So what are the symptoms basically they have to have a TB? So TB in the lungs tends to cause a cough, and it's what's called a persistent cough. So that cough usually lasts more than 3 weeks, and you might have standard antibiotics from the GP and it just doesn't really work to get rid of that cough. So the first main one would be a cough which lasts longer than 3 weeks. Some patients lose quite a lot of weight in a relatively short space of time, and they don't know why they're losing this weight, so they're not trying to actively lose weight, they're eating as normal but they're just getting thinner very quickly. Sweating at night time in particular, and when we talk about sweating at night time in the summer this is quite normal, but this sweating is what's called profuse sweating, so this is where your clothes are wet when you wake up. Often patients report having to change their bed clothes in the middle of the night because they've sweated so much. Okay. Tiredness, so chronic tiredness or fatigue, so they're just lots of lack of energy. And this is even after a full night's sleep. When they're rested, they still just don't have any energy. So if that's persistent, then again speak to the GP. Okay, so काफ़ी साइंस ने जिहड़े कि टीबी दे हो सकते हैं जिद्दां रायन ने दस्सिया कि इहदे विच हुंदा है कि कफ जिहड़ी खांसी सानूं आउंदी हैगी है वो 3 वीकां तो ज़्यादा रहे
तो सानू सोचना चाहिए कि किधरे सानू टीबी की शिकायत तो नहीं हैगी है। वो खांसी लगातार आती है, नॉर्मल खांसी कई बार सानू आती है हट जाती है, पर यह हैगी कि तुहानू खांसी बहुत जोर ला के कह लो जिद्दां आती हैगी है, तेज़ तेज़ आती हैगी है, तो 3 वीकां तक वो खांसी जिहड़ी है जाती नहीं हैगी है। एंड इहदे विच हैगा कि तुसी जिहड़े हैगे बलगम भी आती हैगी है तुहानू, तो हो सकता है कि खून भी आंदा होए, तो हमेशा तुहानू इदां लगता है कि मैं थकावट जी महसूस होंदी है कि ज़्यादा काम भी नहीं कीता हुंदा, तुहानू लगता है कि मेरा शरीर थक्या हैगा, तो टायर्डनैस ये काफ़ी रहिंदी हैगी है। हाई टैंपरेचर भी हो सकता है, तुहानू हो सकता है बुखार भी ये चढ़दा होए, तो नाल वेट लूज भी होंदा हैगा कि तुहानू लगेगा कि मेरा भार घटी जाता है। पर अगर तुसी एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर भार घटता है, तो वो डिफरेंट गल है। पर जेकर तुसी ऐटोमैटिकली जिहड़ा तुहाडा अपना भार घटी जा रहा है, तो फिर यह सोचण वाली गल है कि किधरे टीबी का कोई साइन तो नहीं है कि मेरा बगैर एक्सरसाइज या बगैर मैं घटाण तो मेरा अपना वेट घटिया जा रहा हैगा। तो ये जिहड़े हैगे तुहानू होर चीज़ां जिहड़ियां हैगियां, स्वैटिंग जिहड़ी हैगी, पसीना जिहड़ा हैगा वो बहुत ज़्यादा आंदा है। नॉर्मली आपां वेखदे कि गर्मियां 'च पसीना आंदा, पर इहो जिहे लोकां नू सर्दियां 'च भी पसीना आ सकदा है, तो पसीना इन्ना ज़्यादा आंदा कि तुहाडी बैडशीट्स जिहड़ियां हैगियां वो भी पसीने दे नाल भिग जांदियां हैगियां। सो कुछ साइन ने जिहड़े कि हो सकते हैगे कि टीबी के लक्षण होण, टीबी होण दी निशानियां होण, जिहदे विच मेनली खांसी हैगी है, टायर्डनैस होंदी हैगी है, वेट लूज होंदा हैगा, एंड तुहानू हमेशा स्वैटिंग जिहड़ी हैगी, पसीना काफ़ी आंदा हैगा। सो होर जेकर किसी भी बॉडी पार्ट दे विच हो सकता है तुहानू थकावट या दर्द भी महसूस होए, यह भी मैंशन किया गया हैगा। सो व्हेन टू कॉल 99, दिस इज़ व्हेन इज़ अर्जेंट दैट। Yeah, so hopefully patients with tuberculosis, we pick them up before they get to that level of illness where they need emergency response. But if they're coughing up and their breathing is becoming compromised, then that would be a medical emergency, and that's when they should phone 999. But for the most part, TB is a very slow growing bacteria, so the symptoms take a very long time to get to that point of becoming very, very unwell. So we'd hopefully pick them up before they get to that level of illness. Okay, मैं एलन नूं पुछ रही सी भी कि कदों हुंदा भी जदों सानू अर्जेंटली लोड़ पै सकती है 99 फोन कॉल करन दी, ते इन्हां ने दस्सिया भी ज़्यादा तौर ते हुंदा कि पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। पर हाँ, अगर तुहानू लगता है भी कोई साइंस इदा जो कि NHS वालों दस्से गए हैं, इन्हां दे विच कई साइंस जिहड़े हैगे कि तुहानू हो सकता ज़्यादा कन्फ्यूजन होए, या फिर जिहड़े साइन टीबी दे पहले दस्से हैगे या टीबी जिहड़ा काफ़ी फैल चुका है, उदों जिहड़े साइन होंदे ने वो वैसे तो पहले ही फड़ लिते जाते, जिहड़े नर्सिस होंदियां वो पहले तो मुआयना कर लेंदे हैगे भी हाँ इन्हां नूं टीबी है, जिहड़े साइन दस्से एंड ट्रीटमेंट जिहड़ी है तुहाडी चालू हो जाती है। होपफुली इत्थे तक 99 करन दी लोड़ नहीं पैंदी हैगी, पर जेकर लोड़ पए तो इन्हां ने दस्सिया कि ऑलरेडी उपचार के कई तरीके इन्हां ने मुआयने दे विच तुहाडे दस्से हुंदे हैगे आ। सो व्हाट आर द टेस्ट मेनली, इफ यू कैन इन डेप्थ टेल आवर व्यूअर्स what are the tests done for TB? So when we talk about the sputum sample, so the sputum sample is or anywhere where the infection might be causing a problem, a sample is the main thing, because we can send that to the lab, they can tell us exactly what bacteria is causing this problem for the patient, and we can also test what medications work for that specific strain of TB, because there are lots of different strains of TB and the medication can sometimes need to be adjusted specifically for that strain. Like I say, imaging, most people have had some form of imaging, so that is just radiation that's exposed that will tell us where the bones are sitting, where the lungs or organs are sitting, and what density there is there. So if there's any density in the lungs or in the areas in which the infection is causing a problem, the x-rays will show us that. The blood test specifically checks people's immune system. So if your body's had previous exposure to TB bacteria, the immune system will tell us that you've had that exposure. So you can't get TB without being exposed to it. So that's a really good test to use as well. Very, very sort of less frequently now with children, we sometimes do something called the tuberculin skin test. So the tuberculin skin test, again, is another way to check the immune system. We tend to do that for children now because it's easier to do the skin test on children rather than taking their blood for a blood test.
and that will just tell us if they've had TB exposure in the past as well. ओके मैं रायन को दोबारा पूछ रही सी भी जो टैसट होंदा है कि किस तरीके दे नाल कीता जांदा है। सो सिंपल जिहड़ा असीं स्टार्टिंग दे विच जिद्दां दस्सिया सी कि एक्सरे अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन एंड जिहड़ा हैगा मूकस वगैरह जिहड़ा सैंपल होंदा या बायोऑप्सी जिहड़ी होंदी है ब्लड टेस्ट जिहड़ा होंदा है वो भी इम्यून टू एक्सपोज जिहड़ा हैगा ओहदा पता करन वास्ते कीती जांदी है। ते जिहड़ा स्किन टेस्ट हैगा वो नवीं इन्हां ने इन्वेंशन कीती हैगी कि बच्चों के लिए ताकि उन्हां नूं ब्लड टेस्ट जिहड़ा वो ना देना पे, क्योंकि कई बच्चे जोड़े होंगे घबरा जाते हैं या वो ब्लड टेस्ट नहीं करवाना चाहते। तो ये ऑप्शनस इन्होंने कढ़िया कि जोड़े बच्चे ने उन्होंने चैक करने लई भी उन्हों का इम्यून कितना हैगा TB ते वो सारी इन्फॉर्मेशन जी स्किन टेस्ट के जरिए दे नाल मिल सकती हैगी है। नाउ विल कम ऑन द ट्रीटमेंट फॉर TB। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट एट this stage? What kind of different treatments are done for? Yeah, so the TB treatment, so tuberculosis treatment, is split into two sort of sections. You've got treatment for active TB. Now, active TB is when the patients have symptoms of that infection and it's actively causing them a problem. Okay, so these are the people that have got a cough. These are the people that have fevers and fatigue and weight loss. So it's antibiotic treatment that we give for a 6 months total. Okay. So it's 4 antibiotics that's taken in the first 2 months. Then as you start to get better, we reduce that medication down to just 2 antibiotics for the remaining 4 months. So that's active TB for standard TB infection. There are some different courses that we will use for people that might have what's called drug-resistant infection. So if the standard antibiotics do not work for that specific strain a patient might have, then we might need to adjust that treatment, and the treatment might need to be a little bit longer. Okay. And then we're going to talk about the second sort of type of TB, which is called latent TB or dormant TB infection. So this is when people have had that TB exposure, but they haven't yet become unwell. Okay, so your body's very clever, and it's able to isolate it and keep it sort of controlled for a period of time. If we pick up TB during that stage, then we can get some shorter course of antibiotics to prevent, so we can prevent people falling unwell. So that's a short course of antibiotics for 3 months, and it's 2 antibiotics for that regime. Okay, so there is 2 type of TBs actually. One is active and one is like a sleep TB. So मैं रायन दे नाल गल कर रही सी भी जिहड़े TB दी जिहड़ी हैगी है इहदी ट्रीटमेंट की हैगी है। सो इन्हां ने दस्सिया कि जिहड़े हैगे एंटीबायोटिक दा जिहड़ा कोर्स हुंदा है 6 मंथ लई कीता जांदा हैगा, जिहदे विच 4 एक्टिव जिहड़े हैगे सैशन कीते जांदे हैं, फिर 2 दिते जांदे हैं, 4 तो 2। सो पहले स्टार्टिंग दा जिहड़ा हैगा 6 मंथ दी ट्रीटमेंट हुंदी है, जिन्हों एक्टिव वो हुंदा TB जिहदे विच तुहानूं सारे साइन आ रहे हैं जो कि असीं स्टार्टिंग दे विच दस्से सी। TB दे पूरे साइन तुहानूं आ रहे हैं, खांसी आ रही है, टायर्डनैस है, ऑल दोज साइनस जिहड़े असीं मैंशन कीते वो सारे आ रहे ने। ते इहदे विच जिहड़ा हैगा मेनली एंटीबायोटिक जिहड़ी हैगी है ए दित्ती जांदी है। ते जिहड़ा दूसरा TB है जिहदे विच तुहानूं कोई साइन नहीं आंदा, पर तुहानूं पता लग जाता है, जिहड़े नर्सिस है उन्होंने पता हो जाता है भी तुहानूं TB हैगा। तो ये हैगा शॉर्ट कोर्स जिहड़ा हुंदा 3 मंथ्स का हुंदा। सो वो 3 मंथ्स की एंटीबायोटिक जिहड़ी है वो ट्रीटमेंट के तौर पर की जाती हैगी है। सो 2 तरह के हैगे TB भी, एक जिहदे च तुहानूं साइन आंदे हैगे है ते एक दे विच जिहदे च साइन नहीं आंदे हैगे। सो मेक श्योर ए हुंदा भी जदों नर्सिस का मेन कारण इहो हुंदा है जदों ब्लड टेस्ट या जिहड़ा स्कैन वगैरह करदे ताकि पता लग जाए भी किहड़ा TB हैगा। कई बारी कईयां नूं कोई साइन नहीं आंदा। सो ए साइन जिहड़े हैगे आ वो दूसरे तरीके दे नाल फिर देखे जाते हैं। सो चलांगे हुण नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ TB, व्हाट आर द रीजन फॉर हैविंग अ TB? So TB, like I said, it's a bacteria and it's often spread via infected water droplets in people's breath. So for someone who's got TB on the lungs, if they're coughing or sneezing or shouting or singing, then there's air movement from the lungs into the environment. And if someone's got TB on the lungs, that will be spread into the environment. And then healthy individuals will breathe that bacteria in. So you'll breathe it in, you'll take it into your own body, and then at some point it could cause you a problem.
So that's the main form of TB transmission, okay? Okay, I'll mention this one, then we'll go to the next cause as well. So ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ TB ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ TB ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ TB ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰੀਥ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ TB ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਣਾਂਗੇ what are the other reasons? So the other reasons, sometimes patients may drink what's called unpasteurized milk. So if there's a cow or cattle that's infected with TB, then if you drink the milk straight from the cow without it being sort of pasteurized and cleansed, you can sometimes ingest it, so take that TB bacteria in via that infected milk. ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ TB ਹੋਏ ਔਰ ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ TB ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ What's the next one? So some patients are very vulnerable to infections, so sometimes their immune systems are a little bit compromised. So if you've got any illnesses which lowers your immune system, it sort of lowers your defense mechanisms to TB. So you may have contact with TB via these routes, but in a very short space of time, you can sometimes develop TB. So if you're unwell yourself, you're more likely to get TB if you have contact with it. ਓਕੇ ਸੋ ਥਰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਲਦ ਜੇਕਰ ਉਹ TB ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਮਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਲੋਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਇਨ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ TB ਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਲੋ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ TB ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ TB ਹੈਗਾ ਐਨੀ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨਸ So those are the only ways that you can get TB. Like I said, the time scale for you developing TB varies from person to person. Some people might have contact with TB today and develop symptoms very quickly 1, 2, 3 months afterwards. But other people, they can have contact today and it not cause a problem for 1, 2, 3, 4 years and sometimes even longer than that. It can cause a problem later on down the line when you get a little bit older. Okay. Sometimes again your immune system as you get a little bit older becomes a little bit weaker and that's when TB can flare up. Okay, so ਇਹ ਉਮਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹ ਲਓ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ TB ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੈ 5-6 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਓਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ TB ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟਰ ਹੋਏ ਪਰ TB ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਗੈਟ TB ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ TB ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪੀਪਲ ਹੂ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਹੈਵ TB ਰਾਈਟ Yeah, so there's a number of risk factors for people developing TB. So what we know is TB is more prevalent in certain countries with lots of TB. So you're more likely to come into contact with TB.
And people that have travelled and migrated into different countries, it's very stressful when they first move here, and your immune system can become compromised at that stage. So if you're recent to the UK or recently moved to a different country, that sometimes can make it more likely for you to develop that TB infection. People who we've already said are maybe on medications which lowers their immune system, that sometimes can cause them be more prone to picking up TB and for them to develop TB. People who potentially have sort of unsecure housing or unstable housing, sometimes it's more likely because you're moving from one environment to the other, you're having contacts with lots of different people, and your housing circumstances isn't always secure. And if you're living in an accommodation with multiple different family groups, sometimes that can make you more vulnerable because you're more likely to come into contact with TB. Okay, so there's so many things that can be affected by to have a TB. So काफ़ी reasons हो सकते हैं कि TB ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਣ ਦੇ, people who are more likely, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ TB ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਕਿ TB ਹੋਏ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ TB ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਾਊਡੀ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ TB ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡ ਅਨਹੈਲਥੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ TB ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਾਊਡੀ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ TB ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੈਕਟ ਉਹ TB 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਸਰਟਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ TB 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਣ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ TB ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ BCG ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਅਬਾਊਟ BCG. What's the difference between TB vaccine and BCG? Yeah, so the BCG is just the medical name for TB vaccination. So it's the same thing? It's the same thing, yeah. So that's the only vaccination we have against TB, okay? And in most circumstances, you'll get it at sort of childhood. That's when it's most effective. So the younger you get it, the more benefit you're going to have from it. Or if you work in an environment where you're having lots of contact with TB patients. So if you get a job in healthcare, you will get it later on in life as well. Okay. So Ryan ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ TB ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ TB ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ TB ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ TB ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ BCG ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ BCG ਵੈਕਸੀਨ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਅ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। BCG ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ TB ਦਾ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਾਇਰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ TB ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਮੋਰ ਕਾਮਨ TB ਇਨ ਬੇਬੀਜ਼, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਹੈਵ ਦ ਵੈਕਸੀਨ? Not necessarily more common, but the consequences of them getting TB are more severe. So babies get sicker with TB very quickly because their immune system is very immature, so they're more vulnerable to all infections. But specifically TB, it can spread through the body of a child under the age of 2 very, very quickly. So that's why the benefit is the BCG is most benefit to that age group of people.
ओके सो रायन ने दस्सिया भी जिहड़ा BC जिहड़ा वैक्सीन होंदा है क्योंकि लाजमी होंदा है एज असी पहले भी अपने मिडवाइफ्स दे नाल भी गल कीती सी BCG दे बारे ते वो लाजमी इसलिए होंदा है कि जिहड़ा बच्चा होंदा है उहदे विच काफ़ी सीरियसली तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा TB फैल सकदा हैगा इसलिए अगर उन्होंने प्रोटैक्शन के तौर पर जिहड़ा हैगा BCG वैक्सीन दिता जाता है क्योंकि वो अंडर 2s दे लई काफ़ी वधिया तरीके दे नाल वर्कआउट हो सकदा हैगा रायन ने दस्सिया ते जानांगे थोड़ी जी होर इन्फॉर्मेशन कि जेह्ड़े कंट्रीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ दे विच जेह्ड़ा हैगा TB दा की मुआयना जिद्दां स्पैशली साडे काफ़ी जेह्ड़े व्यूअर्स ने वो इंडिया तो बिलोंग करदे हैगे एंड इटली दे विच हैगे असी मेनली UK दे विच बेस आ ते किन्ना क जेह्ड़ा इफैक्ट हैगा वो ज़्यादा हैगा दूसरी कंट्रियां तो जदों असी ट्रैवल करके अपना इंग्लैंड दे विच आंदे सो इज इंडिया इज अ हाई रिस्क इन TB Ryan or because there is a lot of traveling happening that goes from India to England they're coming there's our viewers most of them is from India and Italy and German more likely so how much is affected when they are coming down here what precaution might be they need to take when they're coming so when people are moving to the UK they will often have a visa application and a visa application does have some TB screening as part of that visa application. So they would have a TB symptoms questionnaire prior to coming here and then they will also have a chest x-ray. So this rules out active TB, okay? So that's one precaution to active TB. But as we've already discussed, there's this dormant stage or sleeping stage of TB infection. So one of the things we do in the UK, in certain areas of the UK where we see most TB cases, is something called new entrant screening programs. So the new entrant screening program is where we will invite you, once you register with a GP here in the UK, the details will be sent to the TB team in the area in which you've registered and they will ask you to attend a further appointment to have the free TB blood test. So this will give us an opportunity to try and prevent further cases of TB in the future if we pick it up early enough. Okay, so मैं रायन ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ TB ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ TB ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਫੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ UK ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਐਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ TB ਦੇ ਲਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ GP ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ TB ਦੀ संभावना तो नहीं है पर यह मोर लाइकली यह ज़्यादा TB का उदों पता लगता है जोड़ा कि एक्टिव TB होंदा उहदे बारे जोड़ा कि स्लीप TB होंदा उहदे बारे फिर भी घट इन्फॉर्मेशन होंदी है क्योंकि जो तक साइंस नहीं आते उदों तक पता नहीं लगता पर अपने वालों पूरी कोशिश की जाती है जिहड़े हुंदे अपने आने वाली जिहड़ी टीमां होंदियां हैगियां इंग्लैंड दे विच जिन्हां ने आना होए या इत्थों दी जाना होए ते यह जरूर चैक करदे आ TB दे बारे इन्फॉर्मेशन तुहाडे कोल होई या जिहड़े वैक्सीन हैगे वो भी जिहदे विच हैगा कि TB का वैक्सीन जिहड़ा हैगा वो भी उपलब्ध होंदा हैगा ते कुछ क्वेश्चन जिहड़े हैगे मैनूं होर जाणांगी रायन कोलों अपने TB के बारे जो कि साडे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं एंड वन मोर थिंग रायन व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ दिस vaccine or treatment so if you can tell about the vaccine then for the medication as well. Okay. So the BCG side effects of the TB vaccination, the BCG, often just causes a little bit of a swelling on the site in which we've done it. That can sometimes develop into a little bit of a lump and sometimes like it looks a little bit like a blister. And then sometimes develops into a scar, okay? Children don't have fevers with this immunisation like they do with the other childhood immunisations. So fever is not commonly reported for this immunisation. That's the only real side effect in a healthy child. So when we talk about the TB medication, they are antibiotics. So they have some side effects that most antibiotics have. So they can sometimes give you a little bit of an upset stomach when you first start taking it. So maybe increasing nausea or vomiting for the first couple of days when you first start taking the medication. But that's not common for everyone. Not everyone reports that as a problem, but some people do.
Sometimes the medication can cause you to have sort of pins and needles in your fingers, but we also give other medications like vitamins to prevent that causing a problem. Okay. But the medication, although it can have some side effects for some people, it's important to know that the vast majority of people don't develop these side effects. Okay, and the benefits of being treated for TB outweigh the risks of the impacts of these side effects. So if you've been asked to start on TB medication by a health professional, then we will discuss all these individual side effects with you at that time and go through the benefits of treatment with each patient. Okay. सो मैं रायन को पुछ रही सी भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ BCG ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਟੀਕਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਸਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ नहीं मिली बच्चों के विच कि कोई फीवर होया होए बुखार होया होए ए बहुत घट चांस है फिलहाल वेखण दे विच नहीं आया पर हो सकता किसी नूं एक अद्धे नूं होए बट मोर लाइकली जिहड़ा फीवर हैगा बच्चों के विच नहीं देखा जबकि दूसरे जदों वैक्सीन लगते हैगे उन्हां दे विच बच्चों नूं बुखार हो जाता पर जिहड़ा BCG दा है इहदे विच नहीं हुंदा मेनली स्वैलिंग हुंदी है लंप्स ते स्कार हुंदा जिहड़े कि इहदे साइड इफैक्ट हो सकते हैं वेरस जिद्दां एंटीबायोटिक जिहड़ी हैगी है TB दे लई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸੋ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਚੈਸਟ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ TB ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ procedure होना है Ryan could you tell us if somebody is find out they got TB and how does the process go for when they come to see you what do you observe or how do you signpost that person if somebody come from a GP to you so our service we are involved in every aspect of that patient's care thereafter their TB diagnosis and even beforehand so we will arrange all the samples for them. We'll arrange the blood tests for them. Once we've decided that this is a TB infection and we've got samples to prove it, we will start the antibiotics. Now, with the TB process, we look after that patient, that's our priority. But because TB is an infectious disease, we have to look at the family members as well to make sure that we are protecting the family and protecting people that they live with, okay? So one of the things we do quite commonly is something called contact tracing. So if someone has TB, we will ask to test their family members, their friends. Sometimes you might have to involve their workplace. So if they're particularly infectious, we may have to screen their work colleagues because this is about disease prevention. We want to treat that person of their TB infection and we don't want them to get it again, okay? And if we don't test their family members and if we don't test their friends, then very often other people can fall sick with TB and then the original case may fall unwell as well because they're going to have repeat contact with TB. So the biggest sort of message that we can really give your listeners and our patients is we need to try and protect the community as well, okay? So we're protecting yourself in a TB patient, but we are protecting your friends, your colleagues, your workplace, because we don't want any further TB cases going forward. And then at the end of the treatment, once we've seen a response, you might have regular chest x-rays or regular imaging and blood tests to see how you're getting on with your treatment and how you're progressing through to TB eradication and recovery from a TB infection.
Okay. So मैं रायन ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀਪੀ ਰਿਫਰਰ ਕਰਦਾ ਟੀਬੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਪੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੀਬੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਫੇਰਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈਏ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੀਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਰਾਇਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਬੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਬੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾਂਗੀ ਕਿ ਹੂ ਐਲਸ ਵਰਕ ਇਨ ਦੇਅਰ ਟੀਮ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੀਬੀ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਜ਼ ਯੂ ਗੋਟ ਅ ਟੀਮ ਰਾਇਨ ਹੂ ਐਲਸ ਵਰਕ ਵਿਦ ਯੂ ਇਨ ਯੋਰ ਟੀਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਆਵਰ ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ So in our team we have a team of 4 TB nurses and we have 3 support workers and each area will have a consultant usually it's either a respiratory consultant or an infectious disease consultant that's based in each area and they are the experts in TB and they will manage the TB service. We have colleagues that work in pharmacy obviously that deal with TB medication quite a lot. Yes. So they're experts in that treatment, in the medication aspects. And we also have some microbiology specialists that work in the lab that are the ones that are processing all our requests for samples and gives us our confirmation of a TB diagnosis and test our medications against that specific strain of TB. ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਟੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟੀਬੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਣ ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਰਸ as well Ryan who tend to be like some ladies who are pregnant or certain time they find out so how do you deal with people who are not able to come to your clinic? So each area is slightly different. So our team in particular, we do both acute care in the hospital, yes, the outpatient service for clinics, and we also cover the community. So if we do have patients where they're unable to come to our clinics, on some occasions we can go to the house. If there are infectious patients, we often try to reduce how many times they're coming into the hospital. If they're infectious, we don't want them to come into contact with people. They will isolate at home and we will do their nursing care at home. So we'll come to them, we'll start their medication at home, we can do blood tests in the community and we get them out of that infectious period of time and then once they're out of that infectious period we may then ask them to come into the hospital to have things like x-rays and other imaging that we can't do in the community.
Okay, so Ryan ने दस्सिया कि इन्हां दी जिहड़ी टीम हैगी ऐसे क्लिनिक भी हैगी है, ए कम्यूनिटी ते भी जांदे ते इन्हां दे OPD क्लिनिक्स भी हुंदे ने। सो जिस तरीके दे नाल इन्हां नूं लगे भी पेशेंट जिहड़ा हैगा उहनूं किस तरीके दे नाल देखना चाहिदा उसे तरीके दे नाल बुलांदे हैगे। सो कईयां दे घरां ते भी जांदे है, कई बारी कम्यूनिटी सेंटर जिहड़े उत्थे भी बुलाया जांदा है ते हॉस्पिटल भी बुलाया जांदा है। जिन्हां नूं एक्टिव TB हैगा, इन्फेक्शन होया, वो ट्राई करीदी हैगी है, ट्राई करदे भी उन्हां दे घर जाके ही ट्रीटमेंट ज़्यादा किया जाए ताकि जो वो आन होरां नूं ना TB की शिकायत होए। सो इसलिए जड़ा इन्फेक्टिड पीरियड होंदा है वो घर जाके ही इन्हां दे ट्रीट किया जाता है या कम्यूनिटी जिथे अवेलेबिलिटी होए उत्थे किया जाता, हॉस्पिटल दे विच घट बुलाया जाता है। पर जो वो पीरियड खत्म हो जाता है उस तो बाद फिर उन्हां दे जिद्दां कह लो भी एक्सरे वगैरह जिहड़े हुंदे हैं उन्हां दे लई उन्हां नूं फिर हॉस्पिटल बुलाया जाता जो इन्हां नूं लगदा है भी हुण ए राइट टाइम हैगा। सो ये ऑब्जर्वेशन करके देखते भी किहड़ा टाइम उन्हां दे लई बैटर हैगा, ट्रीटमेंट कित्थे बैटर रहेगी, कम्यूनिटी च बैटर रहेगी, हॉस्पिटल च बैटर रहेगी। सो एज ए टीम ए डिसाइड करते हैं कि अगर एक्टिव जिहड़ा ज़्यादा हैगा TB ते फिर ए घर जाके ट्रीटमेंट करते ताकि दूसरे लोगों नूं ना होए। And I want to know more about the TB screen as well, which is like you were saying there is something new is coming for our Sandwell people as well. So this is something that we've been doing for the last sort of nearly 2 years now. 2 years. Where anyone that is new to the UK, that has moved into Sandwell and registered with the GP, if they're between the ages of 16 and 35, and they've been born in a country which has high TB rates, and have been here for less than 5 years, they can have this test, so the blood test, the IGRA blood test, and it's completely free of charge, and it tells us whether the body recognises that TB from previous exposure. So it's completely free. They will receive a letter from us, from the TB service, advising them about this test, and we invite them to call us and book in for that appointment. If they don't phone us within, usually we leave it around 2 weeks, and if we don't receive a phone call, one of our support workers will phone them and discuss the benefits of this test with them and invite them to come and see us in our clinic at Sandwell Hospital. Oh, that's really good actually. You know, Ryan, when you say the countries which are highlight areas, you can say for the TB, could you mention some of the countries that is like, because most of the viewers are from Asian countries, so don't know the fair idea which countries have TB. Yeah, so these countries constantly change, but the up-to-date record is on the World Health Organization website that gives you a whole list of countries and the specific incident rates of those countries. But just to mention a few, specifically in our area where we see quite a lot of people coming from these countries, there are sort of India, Pakistan, Somalia, Bangladesh, China, Romania sometimes can be in there as well. The Philippines, so there's quite a few countries that have quite high rates of TB, and if you fit those criteria, it's a completely free test. The treatment for TB is completely free as well, and I think that's important to mention. It's not going to cost people anything financially. सो रायन ने एक बहुत वधिया इन्फॉर्मेशन दी है जो कि 2 साल 2 years तो जी TB की है स्क्रीन जो टैसट होंगे वो चल रहा है एंड एब्सोल्यूटली ये फ्री टैसट होंगे, स्पैशली उन्होंने लिए किया जाता है जो कि दूसरी कंट्रियां तो जिन्हों ते हाई रिस्क है TB होंगी, जिन्होंने इन्होंने मैंशन किया ज़्यादा साढ़े व्यूअर्स जोड़े इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश तो ने या फिलिपियन जोड़े रोमानियन है उन्होंने लिए है। बट पूरी लिस्ट जी हैगी है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जी उन्होंने पूरी लिस्ट दसी हुई है भी किहड़ी हाई रिस्क कंट्रियां हैं जिन्होंने TB की शिकायत होंदी है तो यह जड़ा स्क्रीन टैसट जड़ा हैगा एब्सोल्यूटली फ्री हैगा ते 16 to 35 years जड़े है वो करवा सकते हैं अगर दूसरी कंट्री तो आए विद इन इज इट 2 weeks फ्रॉम the timing is 2 weeks from the. So we send them a letter for the and then if they've not phoned us within 2 weeks, okay. then we tend to phone them as well.
ਸੋ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ फ़ोन नहीं करते तो यह फ़ोन करके पूछ लेंगे एंड वो सारे बेनीफिट्स भी तुहानूं दसदे भी जेकर तुसीं यह टेस्ट करवाते हो तो ये बेनीफिट की ने, यह सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड की जाती है। सो रायन ने बहुत इन्फॉर्मेशन साडे नाल अज टीबी के बारे शेयर की। इज़ इट एनीथिंग एल्स यू वांट टू मैंशन बिफोर वी गिव आवर लास्ट मैसेज to our viewers? Yeah, so with TB, what my patients tell me is they don't like to share that information with people. They're quite private with that information, and they don't want their family members to know they've been diagnosed with TB, and they definitely don't want their workplace to know that they've been diagnosed with TB. But my answer to that would be it's just a standard infection which is more common than what people think. So in the UK we have around just under 5,000 cases a year of TB, and 1 in 4 people have something called the latent TB. So it's very common to have latent TB. So we need to be more open with our diagnosis with people. We need to raise awareness on TB and empower our patients to be able to talk about it. Okay, because the last thing we want them to do is to not tell their family they've got TB, and then one of their family members falls sick later on down the line because they haven't shared that information. Yeah, secrecy is not a good thing when it comes to TB, unfortunately. Definitely. सो इन्होंने बहुत वधिया मैसेज साडे व्यूअर्स के नाल शेयर कर रहे हैं कि बहुत इंपोर्टेंट है कि असी जिहड़ी हैगी हाइड करके ना रखिए। अगर सानू लगता है कि सानू टीबी है, रायन ने सारे सिम्पटम्स दसे हैं, कंट्रीज़ का भी दसिया, हाई रिस्क जिहड़े पीपल है वो भी दसे हैगे। अगर तुसी डरते है टीबी तो घबराने वाली कोई गल नहीं है। इन्होंने दसिया भी 5000 पीपल जिहड़े हैगे उन्होंने टीबी होंदा है, 4 in 1 जिहड़े हैगे पता लगता है भी उन्होंने टीबी हैगा सीगा। बट वो इन्नी देर दी तुसी वेट ना करो कि तुहाडी जिहड़ी हैगी तुहानू सीरीयसली कोई प्रॉब्लम हो जाए या तुहानू कोई साइंस ज़्यादा वड्डे आण लग जाण ते फिर तुसी ट्रीटमेंट ते ले जाओ। उस तो पहला है कि तुसी घबराओ ना, शर्माओ ना, तो जरूर दसो कि तुहानू टीबी है ताकि उहदा उपचार राइट टाइम ते हो सके। सो अज दा इन्हां दा मैसेज भी आइयो सीगा कि जिहड़ा हैगा घबराना नहीं हैगा, इहदी ट्रीटमेंट हैगी है, जिद्दां हर एक बीमारी की ट्रीटमेंट है, इहदी भी ट्रीटमेंट हैगी है। सो साडे कई जिहड़े लोग ने वो सोचते हैं भी यह छूत की बीमारी है, इदां दी कोई गल नहीं है। फ्लू भी होंदा है, उहदा भी इन्फैक्शन ट्रीटमेंट होंदा है। सो इस तरीके दे नाल इहदी भी ट्रीटमेंट हैगी है। सो तुसी अगे आके अगर तुहानू टीबी की शिकायत है तो अपनी पूरी ट्रीटमेंट कराओ। एंड इन्होंने जिहड़ा स्क्रीन टेस्ट भी दसा है जो कि एब्सोल्यूटली फ्री हैगा एंड 2 साल तो 2 ईयर्स तो यह प्रोवाइड हो रहा है। तो यह इन्फॉर्मेशन अज इन्होंने शेयर की कि जिन्होंने टीबी की शिकायत हैगी है वो अगे आके इसका बेनीफिट लेन अपनी ट्रीटमेंट करा के। सो ये नाल ही मैं तुहाडे तो लांगी इजाजत ते मिलांगी नैक्सट वीक हेल्थ टॉक शो दे विच किसी होर गैस्ट दे नाल। जय गुरुदेव।